Doctor. What's valedictory? Assalamu alaikum wa rahmatullah, and good afternoon to all, ladies and gentlemen, distinguished guests, speakers, faculty members, students. Welcome to the valedictory function of this today's National Conference on Social Protection for an Inclusive Development. I can understand it's very hot out there. We will hurry up through the proceedings of this session so that we can conclude in time. In the beginning, I would like to take this moment to extend a special welcome to our Chief Guest, Mr. Abdul Majid Watt, Director, Finance to Government Higher Education Departments. Thank you very much for gracing the occasion. And I would like to, since I said that it's very hot out there, I'd like to call on stage Mr. Professor Firdaus Ahmed Dar Saab. He will summarize the key points of this conference, and after that we will rush with the rest proceedings of this conference. So please. Honorable Abdul Majid Bhatt, Director of Finance, Department of Higher Education, Government of Jammu and Kashmir. Esteemed Principal of the host college, Sayyid Ifratara. Distinguished guests, faculty members, and fellow participants. It's my great pleasure and honor that I, Dr. Firdaus, Assistant Professor in the Department of Political Science, stand before you to provide a concise overview of the research papers presented during the last 2 days on the theme Social Protection for Inclusive Development. Before I go into the main findings, allow me to revisit the essence of our conference and its underlying objectives. The theme of this conference was, and still is, Social Protection for Inclusive Development. And there's a pressing need to address the gaps in our current system and ensure that every individual, regardless of his or her background or circumstances, has equal access to essential social protection. And this is how this serves as a platform for scholars. This has served a platform for scholars, researchers, and practitioners to come together and discuss innovative approaches, share insights, and collectively strive towards building a society where inclusiveness and development go hand in hand. So the conference was subdivided into 5 major themes, sub-themes, such as social protection as a safety net, inclusion of marginalized groups, the relationship between social protection and labor market participation, accountability and governance in social protection, and the future of social protection. For the last 2 days, our esteemed presenters have shed light on various aspects of social protection, examining their role in fostering inclusive development across diverse sectors. Their rigorous research findings encompassing topics such as healthcare, education, poverty alleviation, and social security has contributed to our understanding of the challenges and opportunities that lie ahead. Papers presented at the conference discussed topics such as social protection during COVID-19 pandemic, healthcare access, women empowerment, social protection for persons with disabilities,
mental health of adolescents, violence against women, and impact of social protection on labor market. These are the some papers that have been discussed in the conference. So the papers also emphasize the importance of comprehensive and inclusive approaches to social protection and addressing the issues of gender discrimination, inequality, vulnerability, among other things. The paper presenters also emphasizes the significance of social protection programs in managing natural hazards and reducing vulnerability. It highlighted the role of these programs at international, national, and local levels in addressing crisis and enhancing resilience among vulnerable communities. Those papers explored the importance of social protection in mitigating the impact of natural hazards and building social resilience. Impact of social protection measures on women in India during COVID-19. The papers have also discussed the effects of social protection measures on women in India during COVID-19. The papers have also discussed challenges faced by women such as limited access to resources, increased gender bias violence, analyzing the effectiveness of existing social protection programs in addressing these issues. Preventive measures towards infectious diseases, approach of techniques in healthcare for social protection were also discussed during these 2 days. Papers have also examined preventive measures in healthcare for social protection, particularly in relation to infectious diseases. They have also discussed accessible and affordable healthcare services for maintaining and improving the health of individuals irrespective of their socio-economic status. These papers have also focused on the effectiveness and functioning of healthcare system and how it works globally and locally for the promotion of social equity and social justice. A paper presented by Mr. Rajan Srinivasan and others have addressed the protection of women and children in India. And the various schemes such as Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 missions, Pradhan Mantri Vadana Yojana and PM Cares Fund, which aims to support women and children during crisis. The presentations have also highlighted the persistent challenges of gender discrimination and cultural biases, economic dependence that place Indian women in vulnerable positions. Disability, inclusive social protection, role of social workers, and other papers have also focused on the role of social workers in disability and inclusive social protection. They emphasize that to reduce and prevent the poverty, address inequalities, promote independent living and dignity for persons with disabilities. They highlighted various initiatives and challenges in social protection programs, the need for proper governance and accountability, the incorporation of climate change-related vulnerabilities into the social protection framework. The presentations were also made certain recommendations for the comprehensive social protection for persons with disabilities and importance of collaboration between government and non-civil society actors. The future of social protection in India was also discussed, including the scaling of the social security, achieving sustainable development goals, and importance of health protection, sustainability, equitable socio-economic recovery in post-pandemic recovery efforts. The various papers have highlighted that we need to redefine and revisit the whole discourse on social protection. These are some findings that I have come across during these 2 days. Thank you. Thank you for that. Thank you very much, sir, for your painstaking efforts in putting together the main points of this conference. Before moving ahead with the rest of the proceedings, I would like to request our principal, Professor Sayyid Ifat Ara, to present bouquet and memento to our chief guest, Mr. Abdul Majid Basa. Thank you very much, sir, once again for visiting this college and gracing this occasion. I would humbly request your good self to kindly come forward and share a few words with us. Respected Sayyid Ifat Ara Madam, Principal,
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भीरवा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भीरवा और इसके मल्टीटा कॉलेज से जो यहाँ मेहमान हजरात आए हैं, डिग्री कॉलेज उठवा ये भीरवा के फैकल्टी मेंबरान, नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भीरवा, प्रेस से आए हुए हमारे साथी और अजीज़ बच्चे और बच्चे, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आऊँ और आपके साथ चंद लम्हे यहाँ गुजारें। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। टाइम तो बहुत बड़ा हमारा टाइट शेड्यूल रहता है। अभी मैं एक ही हफ्ता पहले यहाँ कश्मीर आया हूँ, इससे पहले हम जम्मू में होते थे। तो अभी आपको पता ही है, जब आदमी दूसरी जगह शिफ्ट करता है तो सारी चीज़ें वो दोबारा वो अरेंज करनी पड़ती है। तो अभी हम उसी में सिलसिले में थे, तो मुझे किसी ने यहाँ से फ़ोन किया कि नहीं आपको आना है। तो चलो मैंने समझा, अब आपने इस लायक मुझे समझा, मैंने कहा चलो अब आना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये मुबारकबादी देता हूँ, जो जितने भी यहाँ के ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाली जो आपकी टीम है, उन सब को, खुसूसन आपकी जो यहाँ प्रिंसिपल साहिबा हैं कि जिनकी सरबराही में ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। तो ये 2 दिन से ये आपकी जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो जैसा मुझे लग रहा है कि काफ़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस रही है। तो ऐसे प्रोग्रामों से क्या होता है कि बच्चों को भी एक प्लेटफार्म मिलता है, टीचर्स को भी एक प्लेटफार्म मिलता है अपनी बात पहुंचाने का, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है। तो एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। 2 चीज़ें इसमें, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बनता है, बच्चों को जब यहाँ टाइम मिलता है तो उनको एक एनकरेजमेंट हो जाती है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो जाता है, बाहर के लोगों से मिलना जुलना होता है। कुछ लोग तो इसमें ऑनलाइन भी होंगे, उनके मतलब व्यूज़ आदमी सुनता है। तो इससे ये चीज़ें मतलब हमारे नॉलेज में काफ़ी इजाफा हो जाता है। तो ये चीज़ें पार्ट एंड पार्सल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। अब आपको मालूम है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 की है, उसमें तो इन चीज़ों को काफ़ी मतलब वो अटेंशन दी गई है। स्किल में उसमें अटेंशन काफ़ी दी है कि हर बच्चे को स्किल में पार्टिसिपेट करना ही करना है। तो इससे हमारे जो टीचर हजरात हैं, इनको भी एक मौका मिलता है, नए नए जो आइडियाज़, नई नई जो मतलब हमारे टेक्निक्स आ जाती हैं, उनको उनसे इंसान को वाक़फियत हो जाती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम में। तो इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अंजाम दिया है। गो कि आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा ही मुझे लग रही है और यहाँ पे कुछ फैन वगैरह भी नहीं है, तो ये कमी तो मैं महसूस कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को भी काफ़ी गर्मी लग रही है। तो ये काफ़ी पहाड़ी एरिया है, लेकिन फिर भी गर्मी आज कुछ ज़्यादा ही है 2-3 दिन से। तो चलिए, अब ये एक मौका होता है, इसमें हमने ये भी बर्दाश्त करना है। इंसान को तो हर मोड़ पे कुछ न कुछ नई चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है और सीखनी पड़ती है। तो गर्मी काफ़ी है, मैं ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम आप करते रहिए, बल्कि एक चेन ऑफ इवेंट्स होनी चाहिए कि आज अगर बीरवा कॉलेज में है, कल आप यहाँ से बडगाम में चले जाएं, यहाँ की फैकल्टी वहाँ जाएगी, वहाँ पे मौजू कोई और रखेंगे, फिर उसके बाद कहीं जो एडजॉइनिंग कॉलेज है और सबसे बड़ा इस वक्त आपके पास जो प्लेटफार्म है, आपके क्लासरूम्स में वो जो बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, स्मार्ट बोर्ड्स, वो भी एक बड़ा आपको प्लेटफार्म है बच्चों को सीखने के लिए।
क्योंकि वो ऑनलाइन है, तो आप जहाँ भी कहीं मतलब आप देखते हैं कोई बड़ा मशहूर प्रोफेसर है पढ़ा रहा है, तो वो आप लाइव भी बच्चों को यहाँ दिखा सकते हैं। ये कनेक्टिविटी अब आज हर जगह अवेलेबल है। तो ऐसे फिर मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम गाहे बगाहे होने चाहिए, ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी होती रहे। खाली किताबें पढ़ने से चलो एकेडमिक पार्ट तो आप हासिल करते हैं, लेकिन जो इंसान को ऑलराउंड डेवलपमेंट है, उसमें सीखना है, उसमें देखना है कि बात कैसे करनी है, बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, छोटों के साथ, तो ये सारी चीज़ें इन प्लेटफार्म से आपको मिलती हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ, मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपका जो प्रोग्राम रहा 2 दिन का नहायत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। तो इसके लिए आप वाकई मुबारक के मुस्तहिक हैं। और मैं मैडम जी से भी गुजारिश करता हूँ कि आइंदा भी जब कहीं ऐसा मौका मिले तो ऐसे प्रोग्रामों में बच्चों को शिरकत करवानी ज़रूरी है। इसके साथ ही आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप यहाँ पर आए, हमारी हौसला अफजाई की, ये आपकी अला ज़र्फ़ी है। हम आपके ममनून हैं, शुक्रगुजार हैं आप यहाँ पर आए। इससे पहले भी आपने एक बार यहाँ पर तशरीफ़ लाया था, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आप यहाँ आने के लिए और हमारे साथ कुछ अल्फाज हमारे साथ आपने शेयर किए। So once again, thank you very much. I hope that all the stakeholders, and when I say stakeholders, I particularly mean the students, will have benefited from the knowledge and insights of our respected speakers during these 2 days. And the aim behind organizing this program was that you will learn from our respected speakers and take that learning with you for lifelong. I now want to request Professor Mushtaq Ahmed Mallah Sahab. He will come here and we will move on with the distribution of certificates. Thank you very much, Shubir.